Good evening, guys. I hope you are done with Accounting Standard 29, and today we are going to see one of the very important accounting standard, S15 employee benefits, which is very, you know, it's not very hard to understand, but you have to apply some common sense for this accounting standard. And this accounting standard, beta, will carry 4 marks, but I will explain you in first way, in very simple way actually. But the problem is that this accounting standard is a big, standard in itself, and it needs a practical knowledge. So without practical knowledge, you cannot understand these accounting standards, because this accounting standard normally small firms, they never use these accounting standards. But yes, definitely in big companies, accounting standard 15 is applicable. Okay, so employee benefits, try to understand, because here there is need of actuarial valuation. So this actuarial valuation, how we are going to do that actuarial valuation, we will understand it in this accounting standard 15. Not actually actuarial valuation, but the certificate you get from the actuary, and accordingly we will make a provision. Our role is very simple. We are doing only accounting, but this accounting has to be done in the proper way. So accounting standard 15, make sure that you will understand this accounting standard in depth, because you will need this accounting standard at CA final. Index 19 is there for employee benefits. So I'm going to explain it very slowly, because I know this accounting standard students are normally facing problem. एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने के पहले ही बता रहा हूँ, अपने आप में एक समंदर है। आप बोल सकते हो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है, पर हम लोग इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आपको नॉलेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बदले में थोड़ा बहुत इनकम टैक्स के सैलरी हेड का भी नॉलेज आपको चाहिए। सो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सी दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस, आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम, और उसके बाद मैं आपको गुड इवनिंग बोलूंगा। एक अच्छा सा गुड इवनिंग बोल दीजिए। एंड आज का स्टैंडर्ड शुरू करने के पहले, ये लाइट लगा रहना, ये आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने के पहले मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज शांति से पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लेना, क्योंकि आज का स्टैंडर्ड एक बार समझ में आ जाएगा, पर रिटेन नहीं हो पाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो वी हैव 2 days टू कंप्लीट दिस स्टैंडर्ड। आई विल बी वेरी स्लो। First, each and every concept I will explain in detail, and I will need your cooperation, 100% cooperation of each and every student. Please do not give up for these accounting standards. Certain terms you will understand it while solving questions. So till that time, you have to keep patience. So before starting any accounting standard, yes, I want everyone good evening in the comment section. आज के सेशन में मुझे सबसे 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 गुड इवनिंग चाहिए, और मुझे फुल 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 आज का स्टैंडर्ड लास्ट मिनट तक बैठे हुए चाहिए। ओके, सो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एस 1, इन्वेंटरी वैल्यूएशन एस 2, 3 is cash flow statement. 4 is contingencies and events occurring after balance sheet date. 5 is net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. 6 is removed. 7 is construction contract. 8 is removed. 9 is revenue recognition. 10 is property, plant and equipment. 11 is effects of changes in foreign exchange rate. 12 number is accounting for government grant. 13 number is accounting for investment. 14 is accounting for amalgamation. 15 is employee benefits. 16 is borrowing cost. 17 is segment reporting. 18 is related party disclosures. 19 is leases. 20 is earning per share. 21 is consolidated financial statement. 22 is accounting for taxes on income. 23 is investment in associates in consolidated financial statement. 24 is discontinuing operation. 25 interim financial reporting. 26 is intangible asset. 27 is investment in joint venture. Impairment of assets. 28 and 29 is provision, contingent liability and contingent assets. And here we have finished with all accounting standard names. I hope everyone understood S29 in detail. प्रिया जी, साक्षी जी, अर्पित, पार्थ, श्रुति, अनमोल भाई, कोमल, बाल बाला मुराली जी, यस, गुड इवनिंग बेटा। अवंतिका, सुशील, संकलन जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजय जी, गुड इवनिंग बेटा। से गुड इवनिंग, जल्दी 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 जल्दी। रश्मिता, प्रेरणा, अर्पित, गुड इवनिंग बेटा। यस, गुड इवनिंग सर, आई डाउट इन द लेक्चर, previous lectures, accounting standard PDF to ICAI illustrations. I am not understanding the why. We want to create a provision, as in the question, government introduces income tax system. So as a result of change, we have to retrain. Beta,
Yes, actually, we have to retrain them. But suppose if employees, suppose if they leave our organization, in that case, why we should make a provision? It's very simple that we should not make a provision. Reason is very simple that we do not have control over them. Actually, there is a need for retraining to our employees, but beta, this is not mandatory, and these employees may leave your organization, and in that case there is no need to make any provision. When you are giving training to them, you will make an expenses, record expenses in your book, and accordingly you will pass the journal entry when you are giving that training cost. Okay, so no need to make any provision for 31st of March when you will call that person and you organize that seminar. Whatever expenditure you will incur, that you will provide it in your books of accounts. Okay, beta. I hope you are clear with the concept. So yes, might be you think that provision is needed, but sometimes try to understand every time is not like that कि आपको प्रोविजन करना ही पड़ेगा. हाँ, देर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट. सर अंकुर पटेल बोल रहे हैं मेरा नाम नहीं लिया सर. यस बेटा. पात राणा केम छो एकदम मजामा छे बेटा. Yes. So today accounting standard S15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स. चलो स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड. ठीक है. हाँ जी. नाउ ओवरव्यू ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. यस. श्री कृष्ण पल के. और कुछ क्वेरीज होंगी तो पूछ लीजिए. आज का अटेंडेंस है क्या अच्छा? हाँ जी सर, अंडर अटेंडेंस तो है आज. आज संडे होने के बावजूद यस यू आर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स meaning provision and employee benefits. So introduction part, employee benefits, slow song. Employee benefits S15 deals with accounting treatment and disclosures for consideration given to employees in exchange for services they provided. आवाज हळू करो. For services they provided. Okay. Okay. So beta, screenshot number one. Screenshot number one. एक ही मिनट बेटा, हैंग हो गया लगता है. क्या हो गया इसको? Accounting Standard 15 deals with the accounting treatment and disclosures for consideration. Now, consideration means any amount. Sir, why there is a need of accounting standard? So first we have to understand. Sir, it's very simple that we are paying consideration means salary. Are you paying only salary to your employees? No. We are also paying some post-employment benefits or long-term benefits. Sometimes you may share your profits. Sometimes he may take leave. Sometimes he may not take leave. You can carry forward that leave. So in that case, how are you going to record your expenditure? That we have to understand in this accounting standard. So ये accounting standard क्या बोलता है? ये accounting standard सिर्फ consideration मतलब क्या salary pay करना नहीं है. आज आपका एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ा हुआ है. आपके एम्प्लॉय को आप लॉन्ग टर्म पे कोई बेनिफिट देना चाहते हो. आप उसके साथ कोई प्रॉफिट शेयर करना चाहते हो क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाई हुई है. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने सिर्फ उसमें अच्छा खासा पैसा कमाया है तो यू हैव टू पे टू योर एम्प्लॉयज फॉर हिज आफ्टर रिटायरमेंट एज के लिए वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग टू हिम. हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट टूडे. और ये हमें समझ में आएगा with the accounting standard 15. So accounting standard 15 talks about accounting treatment and disclosures for consideration given to employees in exchange for services they provide. I hope. Okay.
आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अच्छा, स्क्रीनशॉट बाद में दो आपको लास्ट में। क्यों रे, जब भी मैं आपका सेशन स्टार्ट करता हूँ ऐसे कभी दिक्कत नहीं आता है, बट ओनली इन while running lecture on BOS app, I always find this problem। हाँ, किसको जलन होती है सेशन से? चलो। ठीक है। Okay, so this is screenshot number one. Screenshot number one, introduction. S15 deals with the accounting treatment disclosures for consideration given to employees in exchange for services they provided. I request to direct entry students, tomorrow is very, very important session that we are starting with the foundation batch. And suppose if you want to improve your basics, don't miss tomorrow's session. 2, 3, 4, 5 days. Next sessions are very crucial session for direct entry students. If you want to improve your basics, please, please, please watch tomorrow's session at 11 a.m. in the morning. uh, First session in that session I'm going to cover your journal entries and also some part of the theory, so please don't miss tomorrow's session. Okay, so yesterday only I told you, and one more time I'm announcing this is only for my dear direct entry students. Okay, chalo. Yes, आई थिंक गुड इवनिंग का टाइम हुआ है, गुड आफ्टरनून है संतोष जी। AS15 does not deals with, सर स्क्रीनशॉट नंबर वन ले लो। स्क्रीनशॉट नंबर वन, टेक स्क्रीनशॉट्स बेटा, फटाफट फटाफट, साइड बाय साइड स्क्रीनशॉट्स लेते रहो। ओके, नेक्स्ट वन, स्क्रीनशॉट नंबर टू। AS15 does not deals with, it does not deals with employee benefits plans which are formal plans or legislation requirement or informal practices. So benefits that you are giving formal plans means whatever salary about discussion is not there. We are not talking about any legislature requirement or informal practices. Remember, and share based payment, if you are paying to your employees, shares, okay, you are giving any, ESOP, employee stock option plan, or ESPP, or stock appreciation rights. We are not going to talk about the share based payment in this standard. Okay, we have a separate guidance note for that share based payment. And now in India also we have a separate share based payment standard. So we are not going to discuss about S15, which is not related to this part, employee benefit plans. So formal plan or legislative requirement, no, 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 nothing like that. Okay, how you are going to decide your salary, how you are going to discuss about your legislature, what is the bonus plan or provident fund, what you have to collect. No, not at all.
Here we are discussing only and only accounting treatment for any salary which is we are giving, and apart from salary, some benefits which are you're giving to employees in long run also, that we are going to discuss over here. Okay, so आपकी और मेरी सैलरी के बारे में कोई चर्चा नहीं होने वाली है ना, प्रोविडेंट फंड के बारे में कोई चर्चा होने वाली है, कितना परसेंटेज करना है या कोई बेनिफिट्स देने हैं या इनकम टैक्स के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और ना इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस कि आप दिवाली बोनस देते हो क्या, मैं देने वाला हूँ क्या नहीं देने वाला हूँ, इसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। सो एस 15 बोलता है जो भी आपको देना है वो दीजिए, और शेयर में यदि करना है तो भाई शेयर्स के लिए स्टैंडर्ड को मत देखिए। यहाँ पे यदि आप शेयर्स नहीं देते हो, आप क्या दे रहे हो, उनको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हो, कैश दे रहे हो, या जो भी बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे अदर देन शेयर, तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। यदि आप आपके एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रहे हो तो भाई प्लीज कृपा करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 का रेफरेंस मत लीजिए, फिर दूसरे स्टैंडर्ड का रेफरेंस लीजिए। तो ये इट्स वेरी क्लियर। यस, एवरी वन ऑफ यू got the concept. So we are not talking about any plans in this chapter, how much you should pay or what you should pay. Yes beta, ठीक है। चलो, so screenshot number 2। हाँ बेटा, टुमारो सेशन यू हैव टू वॉच ऑन यूट्यूब ओनली, फाउंडेशन का एक्सेस आपके पास नहीं होगा। सो कल का सेशन यू हैव टू वॉच इट फ्रॉम यूट्यूब, एंड दोस्त who have not yet watched my foundation but they clear their foundation and just they want to improve their basics can attend tomorrow's session. Tomorrow's session is very very important because it's a first session for new course for foundation. Yes. Everyone clear with the concept? Yes. Till now, any difficulty? We are at very basic level. देखो अभी तक तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ भी नहीं हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट टेकन सर, ओके। चलो, 4 important points that you should remember. What are these 4 important points? Number one, this is applicable to all types of employees, sir. All types of employees. So, which are employees, sir? First one is your full-time employee. There are some beta part-time employees also. Some employees want to do some home work from home only. Okay. So, employees here, casual employees. So, suppose if you need that employees, then only you call them. Okay. So, ये standard सबके लिए applicable है, सबके लिए. Okay. So, this is applicable to all types of employees, full time, part time, casual, everyone. Okay. So, ये पहला point applicable to all types of employees. Screenshot number 3. Screenshot number 3. Okay. बड़ा slowly we will move to the standard. मैं लेके जाऊंगा आपको एक आसान जर्नी में। चलो, benefits can be in cash or in kind, but they are not in shares. So in kind means what? You are giving any extra facility to your employee. Okay, हमारा जो employee है बेटा, आके यहाँ पे उसको हम लोग चाय पानी दे रहे तो वो भी होगा, खाना दे रहे वो भी होगा, वो नीचे से फिर क्या बर्गर वर्गर मंगवाता है वो हमारे पैसों से होगा, वो भी होने वाला है। सो दिस स्टैंडर्ड, यस, बेनिफिट्स कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड। सो ये एम्प्लॉयज के लिए। स्क्रीनशॉट नंबर 2 के बाद स्क्रीनशॉट नंबर 4 है, ये 3 4 आगे। एक सेकंड, मैं हट जाता हूं। सर सभी टाइप के एम्प्लॉयज, सभी टाइप, ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। मिस वेनिसा, नो बेटा, S20 नहीं है, सेपरेट गाइडलाइन है। S20 is not for share based payment beta. We have separate chapter in module number 3, employee stock options plan. Okay, so another faculty will definitely take care about this.
इज आर्टिकल स्टूडेंट इज एम्प्लॉय? बेटा नो बेटा, आर्टिकल स्टूडेंट कैसे एम्प्लॉय होगा? ही इज अ ट्रेनी पर्सन, सो वी शुड नॉट कंसिडर ही सैलरी बिकॉज ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओनली 3 years। और वो तो बेवफा होने वाला है भाई, तो उसको क्यों लेना है बेटा? नो, सो वी शुड नॉट टेक हिम एज अ एम्प्लॉय। ओके। बेनिफिट्स इंक्लूड्स दोज बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू employees and employees dependents. This is very important. So whether you will consider only employees? No, sir. Employees dependent also. Yes, son है, daughter है उसकी, wife है, father, mother, everyone. So screenshot number कौन सा हुआ था रे पिछला? 5. So employee and his dependent. So benefits are not only to employee, but you should consider his dependent also. बेटा ले ले बेटा स्क्रीनशॉट्स लास्ट में, फिर जिनको लास्ट में चाहिए वो दे देता हूं मैं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट नंबर 6 पे आते हैं। सो पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली टू एम्प्लॉय और हिज डिपेंडेंट और अदर पार्टी। फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन एनी फंड्स, ओके, सो प्रोविडेंट फंड जैसे होता है, सो ट्रस्टी, लीगल एयर, तो वो भी इसमें आने वाला है। स्क्रीनशॉट नंबर 6। सो पेमेंट्स किसको किसको होगा? यू विल मेक अ पेमेंट टू एम्प्लॉयज। राहुल शर्मा, we will discuss it at the end. अरे आर्टिकलशिप ये सीए लोगों के पास होती है, आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना वेदर वो आपका क्या प्रोविडेंट फंड कट करते हैं क्या? कुछ भी बोलते हो। वो आपको लिव एनकैशमेंट देते हैं क्या? आप जाओगे उधर रूल्स के हिसाब से। अभी कौन सा डिस्कशन करते हो, मतलब जो इतना इरिलेवेंट डिस्कशन है, आर्टिकलशिप एंड ऑल? व्हाई यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग्स? वी आर डूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 at different level and you are asked about that articleship जिसका पेमेंट है 5,000 to 10,000, और आप उसके लिए इतना चर्चा चल रही है। अब which question you should ask at least at this age you have to understand। कितना छोटा थिंकिंग के हिसाब से बता रहे हो। आर्टिकलशिप स्टूडेंट्स का कौन इधर पूछेगा एस 15 में? वाई आर आस्किंग इस इरिलेवेंट क्वेश्चंस? स्क्रीनशॉट नंबर 6 ओवर। यस। अभी देखो ये राहुल शर्मा, बड़ा, दिस इज पब्लिक प्लेटफॉर्म, therefore I can't tell you these things, but you have to understand now his irrelevant question। See, आर्टिकलशिप में रैगिंग करते हैं क्या? अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैं इस पे दूं, मतलब क्या बताओ, अभी क्या बोलूं इसको मैं? बड़ा तुझे भगवान ही बचाए। कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए राहुल शर्मा जी? एटलीस्ट नाम लेके बोल रहा हूं, आपको ध्यान में आना चाहिए बेटा थोड़ा तो। कौन सा प्लेटफॉर्म चल रहा है? वी आर ऑन द आईसीआई ट्यूब, वी आर नॉट ऑन एनी ये आपका बाकी चैनल्स पे नहीं है हम लोग। ये ध्यान में रखिए कि किधर किसी भी चीज से अपने सर के साथ बात किया, जिनको बाकी चीजें करनी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है भाई, उनके पास जाओ। ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेबिलिटी। Objectives and applicability of this standard. Before asking such silly questions, please ask to yourself whether this is the right platform to ask such questions. And if you think yes, then you can ask these questions. So at least he's a decent person. Immediately he told sorry.
चलो ठीक है राहुल, पर ऐसी गलती वापस मत करना, आगे से नहीं होगा। गुड बेटा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। Objectives of accounting standard 15. What are the objectives? Matching costs associated with employee benefits. Now, this is very important. This is very important. You should match your expenses in the year in which you incur these expenses. Okay. So, payment is irrelevant. Payment is irrelevant, or prepaid is also irrelevant. Timing of their service is irrelevant. Remember, for example, if bonus payable for a long-term service, if bonus is payable for a long-term service, so it should, spread over the period of service as per expectation. So very important that bonus, if every year you are paying, so it should be divided over 4 years. And suppose if you paid bonus, if you work here for with me for next 4 years, so in that case you should spread over that bonus, not only for you should not record it in the fourth year only. You should spread it over 4 years. Got the concept? तो आपको ये बोनस जो है लॉन्ग टर्म सर्विस जो होगा, सपोज इफ आई एम पेइंग द प्रोविडेंट फंड, ओके, if I'm paying the provident fund at the time of retirement. So this provident fund, you should not record it only at the time of retirement. You should spread it every year. Okay. So you will record your expenses, thoda expenses, small expenses every year. And this standard talks about that only. This standard talks about how much you should record every year. In this standard, we are going to see in case of long-term benefits. So this is a long-term service. तो यस, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे रिकॉर्ड करना है करके। नेक्स्ट वन, a quick brain teaser. As per what you understood till now, use some logic and answer the following question. When should pension payable to employees after the service cost should be recognized as cost? During the service period or after the service is completed? So if you are paying pension to your employees, when you should record it? Oh, sorry. I have shown you the answer. So during the service period or after the service period? Yes. So during the service period, the correct answer is you should record pension not at the time of retirement. Okay. When service is completed, no, not at all. So pension also you will record every year some part of that pension as an expenses. Don't record it directly. Okay. Okay. During the service period, yes, you are correct, beta. So try to understand when to record pension. Yes, every one of you. कब record करना है बेटा? Yes, understood. हिंदी मीडियम. सो बेटा देखो, एक बार मैं हिंदी में आई विल टेक अ रिवीजन इन हिंदी. समझ लीजिए कि भाई आप जो पेंशन वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो या लॉन्ग टर्म सर्विस अभी रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना है. स्प्रेड ओवर करना है, मतलब एक साथ ही रिकॉर्ड करना नहीं है कि पेंशन आप बाद में दे रहे हो तो आपने कब रिकॉर्ड करना चाहिए, थोड़ा 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 ड्यूरिंग द ईयर आपको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओके, सो गॉट द कॉन्सेप्ट. हाँ जी बेटा, पेंशन का थोड़ा सा अमाउंट, सपोज यू आर पेइंग 10 lakhs rupees आफ्टर 20 years. सो उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट पोर्शन ऑफ दैट अमाउंट इज आपको ये इस साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओके, नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट्स फॉर ऑब्जेक्टिव. अच्छा, ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना. 6 तक आया था स्क्रीनशॉट 7. हाँ बस. ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? स्क्रीनशॉट 7.
Ankur Patel, what are you doing, beta? If you record after service, beta, it's not allowed, but still you record, then beta auditor will give definitely remark on that. So if you record it at the time of, then beta हाउ टू रिकॉर्ड पेंशन, इसीलिए तो बेटा देखना है ना ये स्टैंडर्ड. सो वेट, सबर कीजिए थोड़ा सा, वेट फॉर सम टाइम, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉर्ड इट. ओके, एट द एंड ऑफ द सेशन, टुमारो सेशन, यू कैन आंसर इट वेरी इजीली हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट. चलो, so screenshot number 7 we have done with. Yes, this I already explained you meaning of employee: full time, part time, casual, and whole time directors also. Okay, see, this standard applies to all form of employer-employee relationship. All form of employer-employee relationship. And while considering employee-employee relationship, there are two concepts: contract of service and contract for service. Now, what is contract for service? This is a professional service. Okay. Contract of service means I have employee and he has some restrictions. Okay, he has some restrictions. So first you have to define whether he is your employee or not. How you can define it? So first you have to see whether there is restriction on employee. At the same time, he cannot take any other assignment. He has to present at my location wherever I will dictate. Okay, so in that case, there will be employer-employee relationship. Now, in case of professional means I cannot put restrictions on him that you should consider only my work. Okay, so he has liberty to do work at any place. Okay, so he can take assignments of other clients also. In that case, there is no employer-employee relationship. If he is working only for me, then there will be employer-employee relationship. He is working for me, but he has a freedom to do any other work. In that case, beta, there will be no existence of एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड देन एम्प्लॉय ये आपका डेफिनेशन में से ये मिट जाएगा. ओके, सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपको देखना है. सपोज उसको रिस्ट्रिक्शन है, वो बाहर के काम नहीं ले सकता है. इन दैट केस, ओके, सो रिमेंबर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. Yes, so decide it accordingly. Better now focus, Santosh, on important points. So you got the difference between employer-employee relationship. हाँ, yes बेटा. राहुल बराबर है बेटा. So that is contract for service. So this standard is not applicable for contract of service, but this is sorry, contract for service. This standard is applicable only for contract of service. So sir, how to decide it is a contract of service? I think screenshot number कितना है बेटा? Tell me. 9 number है ना? Screenshot. Screenshot 9 है ना? सो बेटा यहाँ पे हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखते टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस देखना पड़ेगा, नॉट फॉर सर्विस के लिए. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप. तो इनके लिए एस 15 इज नॉट एप्लीकेबल. इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. नाउ हाउ टू डिसाइड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? So remember, outsourcing contract may not meet the definition of employee. Huh?
बेटा, if there is a historical pattern, suppose if you are paying every year bonus to your employees, historical pattern is there. See, there is no realistic alternative, but you are paying them. Okay, so there is no obligation that you should pay bonus to them. But now you set that historical pattern. You pay to your employee every year some bonus. Okay, so at least 20%, 30%, or for payment full salary, 1 month salary you are paying. So, beta, in that case, if bonus is paid in the historical pattern, then beta, you will make a provision for that. If no set pattern, then there is no provision. Means you decide it at the time. If you are in profit, then only you are paying bonus, and if you are in loss, you won't pay bonus. So there is no set pattern. Okay, in that case there is no need of provision. Okay, but suppose if you have set pattern, yes, every year whatever the company's position, but you are paying your bonus to your employees, in that case historical pattern is there, then you will definitely provide for that bonus. If suppose if it is year ending date, if it is year ending date, then definitely you will make a provision for that. Okay, so एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ, देखो बेटा आपका जो पैटर्न है, हिस्टोरिकल पैटर्न, अभी आप एग्जांपल में दे रहा हूँ कि आपने आपके एम्प्लॉयज को एक बोनस देने का डिसाइड किया है, और ये बोनस जो है वो आप हर साल देते ही हो। कितना देते हो? एक एक अमाउंट आप लोग देते हो, मतलब 10%, 20%, या सैलरी को पूरा सैलरी दे देते हो। तो आपने ये पैटर्न सेट करके रखा हुआ है, और वो आप कोई भी हालत में, आप कंपनी प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी, फिर भी आप ये देते जा रहे हो। तो हिस्टोरिकल पैटर्न ये सेट करके रखा हुआ है, तो बेटा आपको ये प्रोविजन करना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ सेट पैटर्न नहीं होगा, तो देर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन। आया समझ में बेटा? अंडरस्टूड क्या? स्क्रीनशॉट 8 कौन सा था? ऑब्जेक्टिव था, सॉरी 7 था। ओके, अच्छा नहीं, सॉरी, दिस इज स्क्रीनशॉट 8 है। दिस इज स्क्रीनशॉट नंबर 8। सॉरी, दिस इज 8 नंबर। अवंतिका बेटा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। एम्प्लॉय जो है वो बेटा कभी भी एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे। जो भी बंदा आपका काम कर रहा है वो दूसरे भी काम कर सकता है, उसको कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आपने यही काम करना चाहिए। तो वो केस में उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बोला जाएगा, और उसके लिए S15 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके लिए S15 एप्लीकेबल नहीं होगा यदि आपका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है। मतलब वो आपके आप जो बोलोगे उसी उतना ही काम वो करेगा, उसको दूसरे काम अलाउड नहीं है, वो आउटसोर्सिंग नहीं करवा सकते हैं हम लोग, या उसको वो जगह पे आके काम करना पड़ेगा जहां पे भी आप बोल रहे हो। तो वहां पे फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन है, वो दूसरे काम भी पकड़ सकता है। तो फिर वो केस में वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा, और फिर S15 इज नॉट एप्लीकेबल, ये ध्यान में रखो। सो अवंतिका जी, ये था आपका स्टोरी अभी का। टिल नाउ एनी डिफिकल्टी बेटा? टिल नाउ एनी डिफिकल्टी? और ये था स्क्रीनशॉट नंबर 9। और कोई सेट पैटर्न नहीं है, तो फिर प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। मेहरीन जी, आपकी कमेंट मुझे आई नहीं है बेटा। समटाइम्स क्या होता है, मेहरीन का कमेंट है मोर लाइक फ्रीलांसिंग इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। यस बेटा, फ्रीलांसर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आएंगे। यस बेटा, प्रिंस वेट फॉर सम टाइम। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में सी आएगा। यस बेटा, यस, फ्रीलांसर कैन बी, यू कैन कॉल देम एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आएंगे। यस, टिल नाउ एनी डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी टिल नाउ? ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। So we have completed till now. How many pages we have covered?
हाँ जी, illustration 1 you can do by your own now. Kinds of employees. So formal employee relationship. No, beta, it's not required. So this is the second question we are done with. Informal practices means bonus वगैरह. If there is historical pattern, then you should provide it. If there is no pattern, then beta, you should not provide it. Okay. So second question based on that. Second question is based on that. Whether informal practices means Diwali bonus in simple language. Whether you will provide beta diplomatic answer. Neither yes nor no. Okay. So diplomatic answer. So how you should give diplomatic answer? The historical pattern. Then beta create a provision. If no historical pattern, there is no set pattern, then beta it is yes. So till now we are finished with 4 pages. Okay. Till now no difficulty beta. नो डिफिकल्टी तो आपके मॉड्यूल के 3 पेजेस कवर हो चुके हैं यस सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यस बेटा जॉब में जो सीए होगा वो एम्प्लॉय होगा जो प्रैक्टिस में सीए होगा वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में होगा ओके रिया जी सो 2 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड you can easily read now ILU 1 and ILU 2 it is very simple now employee benefits now very important ratta mar point huh. What are indicators of employer-employee relationship? So how you are going to indicate that? Okay, not Rattamara. This is not Rattamara. Wait. So indicator, contract of employment exists. So there is a contract of 4 years, 5 years, or there is an agreement between them, employer and employee. So this contract, okay, is the employer-employee relationship. Employees as per legal, tax, social security purposes. Okay, so whatever the legal purpose, yes, your employee or for tax purpose also, employee relationship is there. Oversight and directions by the employer. So whatever directions, he is not taking his own decisions. So he's doing activities according to employer's instructions. Okay. And service perform at the location which is specified by the employer. So these are some indicators. So these are some indicators. 9, 10. So what are indicators? Screenshot number 10. What are indicators? Today I think you will finish with your notes. Okay. So everyone is clear, beta? Standard difficult होने के बावजूद we are trying to make it very simple. So till now there is no difficulty whether AS15 is applicable. So questions to you, फटाफट बोलिए. Questions मैं पूछता हूँ आपको. सबसे तेज आंसर कौन दे रहा है भाया देखते हैं. Yes. Who is giving fastest finger fast? चलो. First one, who is giving the answer? Tell me whether S15 is applicable to shares which are issued to employee. Yes or no? S15 is applicable to shares issued to. Yes, beta. 100 pages ka notebook. Yes, beta. Navneet, in 100 pages notebook. Can you tell me whether S15 is applicable to shares which are issued to employees? First answer by. First answer by. Ho ho ho. Aisha Sayyed is the first answer. Okay. Yes. Suraj, very good beta. No. Srishti is saying yes. अभी क्या बोलने का भाई? Prajwal is saying yes.
शेयर्स शेयर्स इशूर को एप्लीकेबल है क्या? हम लोग शेयर्स देंगे एम्प्लॉय को तो एक्सेप्शन के लिस्ट में देखा ना हमने। क्या बोलते हो बेटा? क्या ध्यान है आपका? दोज हु आंसर्ड यस बेटा। अश्विनी बोल रही यस। 90% स्टूडेंट आंसर नो। हार्डली देर आर सम स्टूडेंट्स। देवराज यस बोल रहा है। क्या देवराज? सेकंड क्वेश्चन, whether if I'm paying bonus informally, bonus informally, then beta, should I record it or not record it? Should I record it or not record it? What about bonus if I'm paying informally? Then beta, wow, I'm going to record it. अरे वाह, रिटो बैनर्जी। If there is historical pattern, yes. Otherwise, no. Only one student answered it very properly. Aisha answered it. Very good. Answered it very well. If historical pattern, then yes. Otherwise, no. If employee has no other client, he has served for the client for a long time, he faces little or financial risk and requires explicit permission of employer to undertake employment elsewhere. So this is also is your employee then. Employee benefit includes, this is very, very, very important chart. Short-term benefits means which you are payable within 12 months. This is very important chart. Long-term benefits which are not payable within 12 months, more than 12 months. Post-employment means which is at the time of retirement. And termination benefits means if you are terminated, you will get the VRS payment. So VRS payment, the standard is divided in four parts. The standard, now very, very important. Here we are starting with the standard for accounting. So we are going to do accounting for four types of accounting, that is short-term benefits, long-term benefits, post-employment benefits, and termination benefits. So one more time. Yes, short-term benefits, long-term benefits, post-employment benefits, termination benefits. Short-term benefits, long-term benefits, post-employment benefits, termination benefits, short-term benefits, long-term benefits, post-employment benefits, and then termination benefits. Last time, short-term benefits, long-term benefits, then post-employment benefits and termination benefits. So till now, there is no difficulty. I hope you are clear with this concept now. चलो एक बार लिख दो बेटा कमेंट सेक्शन में. Everyone please write it in the comment section. How many benefits are there? This chapter is divided in four benefits बेटा. How many benefits? Four benefits. चलो VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट. ओके बेटा, ये स्टैंडर्ड चार पार्ट में मोहम्मद जी डिवाइड हो चुका है. तो ये चार पार्ट्स कौन से? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोस्ट एंड टर्मिनेशन. चलो लिखो कमेंट सेक्शन में फटाफट.
Okay, beta. So I hope you are finished with this 4 parts. Very good, very good, very good, very good. Voluntary retirement service, beta. I will explain it at the end. Don't worry. Chalo. So let's move to first benefit, that is short-term employee benefits. EB means employee benefits. Screenshot number 11 tha wo. So benefits which are payable within 12 months. Within 12 months from the end of the service. Okay. So accounting of this benefit is generally straightforward because no actuarial matlab kya? Actuarial means he will give you guidance when you have to make a long-term payment. So what is the amount that you should record it today? He will give you the guidance. So wait, actual valuation we are not going to see today. Tomorrow we are going to see. Okay, actually will give you some assumptions, and now based on that assumptions, we are going to record that. Okay, so yes, very important. Screenshot number 12. So this is very simple because actually is a person. There's actual science exam you have to pass, and there are very few actuaries in our India because this exam is really very tough, in which you need minimum 90 marks in 12th standard in mathematics. And beta, there are many, uh, actually exams, there are many stages which are involved, like your foundation, inter, and final. There are many stages in which you have to clear, and then beta you get the degree of actuary. So this is like one of the difficult course actually, and these people are beta very 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 intelligent people beta. Okay, so actually मतलब एक अलग दिमाग होता है उनका. ठीक है. मीन्स वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस होती है. वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस. स्क्रीनशॉट नंबर 12. Now, all short-term employment benefits, employee benefits, short-term paid absences, and this standard is basically divided in 3 parts. And short-term absences are again divided in accumulating and non-accumulating. And accumulating is again divided in 2 parts, vesting and non-vesting. Now, what is vesting and non-vesting that we have to see? But before that, this is a master chart. So you can call it as a master chart. Screenshot number 13. So write down these things, beta, in comment section. How this standard is divided. Short-term benefit is divided. All short-term employee benefits. Then absences divided in again accumulating and non-accumulating, and accumulating once again divided in vesting and non-vesting, and profit sharing and bonus share plans. Profit sharing and bonus plans. So all short-term benefits, short-term paid absences will be divided in 2 parts, accumulating and non-accumulating, vesting and non-vesting, and profit sharing and bonus share plans. चलो जल्दी से याद करो बेटा ये चार्ट को याद करो. राइट इट इन द कमेंट सेक्शन दिस चार्ट. यस, recall it, recall it, recall it.
all short-term benefits, short-term paid absences, accumulating, non-accumulating, accumulating again divided in two parts, vesting and non-vesting, and profit sharing and bonus plans. Okay, beta? Very good. Beta, this standard is, I'm trying my 100% to make it very simple, because this standard, if you read by your own, believe me, you won't understand a single sentence. Okay, the standard in itself is an ocean. It needs, when I was in CA final, my faculty is always, used to call some KPMG or Deloitte persons to explain the standard. Okay. And they give so much technical knowledge normally. So it's very difficult to grasp it. So 90% students, they keep the standard in option. But Sanket's students, better, they never keep this chapter in option. Yes, I know you can easily correlate all these things. We have tried our best to make it very simple. So till now, any difficulty? No. मानसी, यस बेटा, आपका मैसेज मुझे आ रहा है बेटा. आज पहले मैंने बोल दिया था मानसी कि आज का सेशन कोई भी मिस नहीं करेगा, बट आई थिंक आप लेट ज्वाइन हुए आज. एंड यू हैव टू कीप पेशेंस टिल लास्ट मिनट. जब मैं सीए फाइनल में था, एक बार हिंदी में बता देता हूँ, तब हमारे सर जो थे बेटा, वो ये स्टैंडर्ड के लिए एक अलग से टीम बुलाते थे एक्सप्लेन करने के लिए, और वो बहुत टेक्निकल नॉलेज देते थे कि बाद में हमें समझ में नहीं आता था कि ये स्टैंडर्ड ये क्या आया क्यों है. और इतना टेक्निकल नॉलेज जो आपसे उम्मीद नहीं है, जब आप ये जाओगे इन रियल लाइफ, यू आर गोइंग टू गेट दिस नॉलेज. ओके. यस. अविनाश, Avinash is saying, yes, beta, you are very sincere student, Avinash, I think, because he is telling me, I was reading the standard today and it went out my head, but now I am getting it. Yes, beta. Yes. अमूल्य जी, अभी तक मैंने शॉर्ट टर्म के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की है. अमूल्य, understand, beta, short term means which you are going to pay within 12 months. And the standard short term is basically divided in first part, that is all short term benefits that you are paying. That is basic, dearness allowance, whatever amount you are paying to your employee, short-term paid absences. So leave, how we are going to record leaves, accumulating and non-accumulating. So yet I have not explained it. I just have given you the master chart for this standard. Now I will explain short-term employee benefits line by line. Okay. अभी मैं explain करूंगा line by line बेटा. Till now, till this point बेटा, I have not explained you anything. Okay. Yes, beta. Wait. Short-term paid absences, beta, I'm going to explain it. Don't worry. First one, all short-term employee benefits. So, enterprise should record expenditure at undiscounted amount. Why? Undiscounting. Discounting. When you will do it, discounting, when you will get the benefit for more than 5-7 years. Okay. Then we'll do a discounting. If I'm going to get this, I'm going to pay this salary within 12 months. Why should I discount it? Okay. लॉजिक इज वेरी सिंपल. मैं डिस्काउंट कब करूंगा? डिस्काउंट मतलब जब मुझे पेमेंट करना है 4 साल बाद, तो आज रिकॉर्ड करना है, तो भाई मैं डिस्काउंट करूंगा ना. लीज वाला डिस्काउंटिंग बेटा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना ऑलरेडी सिखा दिया था कि नहीं? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1+r/n. उसको डिस्काउंट किया था कैलसी पे हमने, शॉर्टकट ऑफ कैलसी बताया था मैंने. इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस करना सिखा दिया कि नहीं? हाँ, लीज में सिखाया था, लीज में. वॉच दैट सेशन. तो डिस्काउंटिंग तो सबको आना चाहिए.
बिकॉज यू आर नॉट येट स्टार्टेड विथ योर एफएम बैच, करेक्ट है? हाँ, एफएम का अभी तक आपने शुरुआत किया नहीं है। यस श्रुति, मैसेज आर विजिबल। तो टेल मी, are you going to discount it? Yes. In the comment section, if you are giving it 12, within 12 months, if you are going to pay your expenditure within 12 months, are you going to discount it? आप यदि 12 महीने के अंदर पेमेंट करना चाहते हो तो डिस्काउंट करना जरूरी है क्या? डिस्काउंट मतलब क्या? कल की वैल्यू जो 4 साल बाद देनी है उसकी आज की वैल्यू बड़ा ऑब्वियस कम रहने वाली है ना। हाँ, व्हाट इज डिस्काउंटिंग कि 4 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए देना है, तो आज मेरा रिकॉर्ड कितने पे करूंगा? 1 लाख से कम पे रिकॉर्ड करूंगा, और इंटरेस्ट उसमें ऐड होता जाएगा, इंटरेस्ट उसमें ऐड होता जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ओके, डिस्काउंट मतलब कम करना। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस, वॉट एवर रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस मीन्स वॉट एवर यू हैव पेड and whatever the expenses incurred. The difference is we call it as if it is, if expenses paid is less than whatever the expenses incurred, then payable is there, and extra paid किया होगा तो asset is there, prepaid. So asset means what? Prepaid, and this is payable. Okay. So logic is very simple. Salary, if I'm paying 12,000 and actual expenditure is 13,000, so 1,000 is payable. And if I'm paying 12,000 and your kharcha is only 10,000, so 2,000 will be your prepaid. Okay. So this is very simple. You already done it in the 11, 12 standard expenditure, prepaid, payable, and this is given by the institute. Okay. समझा क्या मेरे दोस्तों? कितने पेजेस हो गए? हाँ, सी, illustration number 3. Actuarial assumption, beta, we'll do it later. Here, no actuarial valuations, assumptions. Beta, Ria, wait for some time. Slowly, slowly, we are moving towards the standard. So actuarial assumptions, better wait for some time. So solve question number 3, beta. We have completed 7 pages till now. Because we are not discounting, Meherin ji. If we are not discounting, then we use the term undiscounted. Discounting, we are not doing discounting. So the term is undiscounting. Okay, not discounting. Undiscounted means not discounting. 2 crores की salary they have to pay, but they actually paid only 1.9. Balance in next year. So your expenses is 2 crore and your liability is 10 lakhs because you paid only 1.9. So what is the entry? Entry is very simple. Salary account debit 2 crore to bank 1 crore 90 lakhs for direct entry students. Salary provision or payable. So my salary payable is 10 lakhs. Okay. Actuarial assumptions के लिए wait कीजिए. Wait. So 7 questions over. 7 pages over. Okay. Now accumulating and non-accumulating. Beta, I'm going to give you break for 10 minutes, 15 minutes. चलो 20 minutes का break ले लो because 5 minutes you read this theory, 5 to 10 minutes and 10 minutes का break ले लो. We are going to meet at 7:10 हुआ है, 7:30 को हम लोग मिलेंगे. But in break
You read this compensated absences. So what you are going to read? Short term compensated absences. Better read this question theory and try to solve this example. Try to solve these examples. I'm giving you exactly 20 minutes का break. Okay, 7:30 को हम लोग मिलेंगे. But I'm expecting in break, you should read this theory. So take this break as a positive thing. Don't take more than 5 minutes का break for you. I will take 20 minutes का break, but you should read this theory और ब्रेक के बाद आ जाइए. We'll meet at 7:30. Okay, चलो ब्रेक ले लीजिए निसर्ग जी.
I hope beta you are clear with the concept of compensated absences. Welcome back once again to our session. Yes, I hope you read this theory and you got nothing. आशा करता हूं कि आपको कुछ भी नहीं समझा है या समझ में आया. टेल मी. यस बेटा. समझे या नहीं समझे? वेरी गुड. हाउ मच यू अंडरस्टूड बेटा? श्रुति बोल रही है सर एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट समझा, सेकंड पार्ट 20% समझा, एंड एक्यूमुलेटेड एंड नॉन एक्यूमुलेटेड 60%. ओके, देखते हैं कितना समझ में आ रहा है. ओके, चलिए बेटा. सो बताइए मुझे. यस, हाउ मच यू अंडरस्टूड बेटा? नथिंग. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस. शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस accumulating means leave gets carried forward. Leave gets carried forward. Vesting, cash payment for unused entitlement on leaving the enterprise. Okay. And non-vesting means not entitled to cash payment for unused entitlement on leaving. Vesting means you will get cash accumulated. Now, what is accumulated? Suppose, yes, let's see the example. I'm giving you some examples, बेटा. चलो, एग्जाम्पल्स मैं देता हूं आपको. See, first try to understand what is non-accumulating. Non-accumulating. See the entry. Tell me the answer. Question 1. These are my questions, beta. This is only for concept clarity. I will upload this question, or you can take a screenshots. Okay. SS Limited has one employee. His name is Sharan. Sharan has owned 30 days a leave per annum. He's paid 9 lakhs. The year is 365 days and he worked for 5 days a week. He took only 20 days and his leaves are non-accumulating. Suppose if it is accumulating, then 10 leaves carried forward. 10 leaves carried forward. But as it is non-accumulating, so no carry forward. No carry forward. So what are the journal entries? And calculate any leave pay provision on 2015-16. बोलिए बेटा.
So, what are the journal entries for 15-16? Tell me. बेटा, we are not going to deduct his salary. We are not going to deduct his salary. Why? Because he has taken leaves which in within limit. हम लोग उसकी सैलरी कट करेंगे क्या? हिंदी में समझ लो, 30 दिन का हमने लीव दिया है, उसने 20 दिन का ही लीव लिया। सो टेल मी, हम लोग उसके लीव्स कट करने वाले हैं क्या? नॉट एट ऑल। तो जर्नल एंट्री इज वेरी सिंपल। जर्नल एंट्री इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और सैलरी पेएबल 9 lakhs rupees in a year. Okay, 9 lakh rupees in a year, 75,000 per month. 75,000 per month. So it will be divided over the year. So every month you will pass the journal entry 75,000 and salary account debit to bank, salary to bank, salary to bank, and last year may might be salary to provision or salary payable 75,000. So it's very simple. Our expenditure, our expenditure will be 79 lakhs per annum. So P and L hit कितना होगा? P and L के डेबिट में 9 lakhs. Easy, easy. So accumulating is very simple. Non-accumulating. Leaves do not get carry forward. In other words, cost of non-accumulating absences should be recognized as and when they arise. Okay. Non-accumulating absences you will cut, deduct. But here we are within limit. That Sharan is within limit. So we are not going to deduct any amount of Sharat. Easy है क्या? Non-accumulating easy. So you can take a screenshot. कौन है? Take a screenshot. This is a non-accumulating. क्या है screenshot number? 12 हो गया था, 13 हो गया था, 14. So screenshot number 14. Non-accumulating. बेटा अरे नेहा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं इसमें, क्या है बेटा? देख बेटा, नॉट, हमने 30 दिन का लीव मिला था, 30 days का लीव मिला, और 20 दिन ही उसने लीव लिया, तो 10 दिन का लीव उसने लिया ही नहीं। पर हम लोग उसको बोल रहे भाई तूने लीव नहीं लिया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तुझे एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देंगे। 30 दिन है तो तूने पूरे 30 दिन का लीव ले ले, नहीं तो 9 लाख रुपीज हम लोग वैसे भी पे करने वाले। हाँ, यदि उसने 30 दिन से ज्यादा लीव लिया रहता तो हमने उसका पैसा कट किया रहता। अभी पैसा कट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज 30 दिन का लीव था अलाउड, और उसने 20 दिन लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ मुश्किल है ये क्वेश्चन? हाँ, अभी 40 डेज लीव लिया, इफ 40 डेज लीव लिया तो मुझे बताओ, 9 लाख रुपीज कितने दिन का है? 365 डेज का। उसने 10 डेज एक्स्ट्रा लीव लिया, तो हम लोग उसको सिर्फ 355 डेज की सैलरी पे करेंगे। हाउ मच सैलरी वी आर गोइंग टू पे? ओनली 365 डेज के नहीं, 355 डेज। सो 355 डेज मीन्स इतना हम लोग पी एंड एल में हिट करेंगे। सो सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है भाई? तो पी एंड एल में कितना जाएगा? ओनली 355 डेज, बिकॉज दैट इज द एक्सपेंडिचर he has taken only. We will pay less amount. Less amount means less expenditure. इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई? ओके,
नाउ accumulating. Leaves gets carried forward. Leaves gets carried forward. ये कौन सा हुआ था स्क्रीनशॉट? 14 हुआ ना? हाँ. Now 15. And carry forward में cash payment for unused entitlement on leaving the enterprise. He will get this extra amount. Non-vesting means he will not get any cash payment on unused entitlement on leaving. Okay. See, beta, I will give you example for this. Remember, yes, 15 ले लिया screenshot. Remember, no distinction should be made between vesting and non-vesting. Only the difference is non-vesting जो होता है here, non-vesting entitlement means possibility of employees leaving the enterprise before receiving them should be taken into account. अब ये क्या है? Try to understand. ये क्या है? Try to understand. So we'll consider वेस्टिंग वर्सेस नॉन वेस्टिंग. ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको. सी, मिस्टर सागर इज वर्किंग फॉर एसएस लिमिटेड. ही इज वर्किंग फॉर एसएस लिमिटेड. एनुअल सैलरी इन लास्ट ईयर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. Last year and current year, because this standard is difficult, therefore I am giving some my examples. Annual salary 30 lakhs. Try to understand it, it's very simple. Annual salary कितना है? 30 lakhs. Say yes or no. हाँ जी बेटा. Okay. So annual salary 30 lakhs. Number of working days during the year 300 days. Leave allowed is 10 days. Leave taken 7 days. So he carry forward to next year 3 days. Okay. Based on the past experience, SS Limited करना था इधर. SS Limited assumes that Mr. Sagar will avail the unutilized leaves of 3 days in 2000, 2001, in 2001-2. So he will take that leave in the next year. SS Limited contains that it will record rupees 30 lakhs as employee benefit expenses in each year in 2000 and 2001-2, stating that the leave will be any case be utilized in 1-2. In 1-2. ठीक है? Comment on the accounting treatment. Followed by SS Limited. वहां पे भी थोड़ा सा गलत हो गया मेरा. हाँ जी. Also pass journal entries in both years. Journal entries in both years. Okay. Very simple. देखो आंसर. Year 2000, 2001.
C expenses to be recognized. 3, 2, 2, 2. Expenses to be recognized. दो जगह पे गलत हुआ है वो थोड़ा क्वेश्चन में. कंट्रोल. चलो, expenses to be recognized 30 lakhs divided by 300 days is rupees 10,000 per day. 10,000 per day. Correct? Number of days worked. Number of days worked 300 minus 7 days, 293 days. And 3 days allowed to carry forward. Allowed to carry forward. बराबर है? Therefore, expenses is equal to within 30 lakhs है, within ये है, so plus 10,000 into 3 days, which is allowed to carry forward in next year. If it is not allowed, then beta we will record only 30 lakhs as expenditure. Because 30 lakhs anyhow you have to pay because he has worked within limit. He has worked within limit. Okay. So how much record expenses you will go into record it? 30 lakh, 30,000. So P&L debit 30 lakh, 30,000. In year 2001-2, into the year 2001-2, number of days worked is equal to how much beta? 2 300 minus 13, 287 days. Allowed days 10 days. And 3 days already carry forward from last year. Therefore, already recognized expenses in last year. Okay. Already recognized expenses in the last year. So P&L के डेबिट में कितना होएगा? 30 lakhs minus 30,000, 29 lakh 70,000. 29 lakh 70,000. बेटा एंट्रीज 2001-2 salary account debit 30 lakh 30,000. 30 lakh 30,000 to bank. You paid only 30 lakhs because you allowed 30,000 to carry forward.
to provision for salary, which is allowed 30,000, you will show it as a liability. And in 2, 3, sorry, this is in 1, 2. Sorry, 1, sorry, it's my mistake. And here in 1, 2, 1, 2, what you are going to record? Salary account debit 29,70,000. Provision for salary to bank 30 lakhs. So you will reverse. You will reverse. Reverse. काय झालं? So provision for salary to bank. So beta, this is how you are going to carry forward your loss. So you are going to carry forward your loss. Okay. So you are going to carry forward your loss. It's very simple. That 3 days ka leave I will carry forward in the next year. So accordingly, I will record it. Okay. So I will make a provision for that 30,000. Though I have not paid, I paid only 30 lakhs. But that 30,000 expenditure, which he has not taken leave in the current year. So though if it is carry forward in the next year, that expenditure I will book today. ये expenditure booked today. Expenditure booked now. Remember. याद रहेगा बेटा, एक्सपेंडिचर को बुक करना है नाउ. आई होप पूरा समझ में आया होगा. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. दैट कमेंट ऑन द अकाउंटिंग treatment proposed to be followed by SS Limited. Also pass journal entries. So 30,000 I will book today, though it is carry forward in the next year, and we will assume that person will take that salary ka leave and we will do accordingly. Suppose if employee has availed only 12 days leave in 1, 2 and remaining 1 day leave is lapsed, what will be your treatment? So what is your opinion? यस, एक बार हिंदी में बताओ. उसका एक दिन का लीव सो बेटा आप बोलो. देखो बेटा, एक बार हिंदी में बता देता हूँ. देखो बेटा, 300 दिन का उसको सैलरी मिल रहा है 30 लैक्स के हिसाब से. मतलब 10,000 पर डे उसका सैलरी है. 10,000 पर डे उसका सैलरी है. अभी उसने 10 दिन का लीव अलाउ किया था उसको. ओके. पर उसने 7 दिन ही लिया. तो उसकी सैलरी कटी क्या? सैलरी नहीं कटेगी. क्यों नहीं कटेगी? पूरा 30 लाख रुपए उसको मिलेगा. पर अभी जो खर्चा उसका नेक्स्ट ईयर में, मतलब ये 3 दिन का खर्चा, ये मेरे जेब से तो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको सैलरी दिया था. 10 दिन की मोहलत दी थी, 10 दिन उसने लिया नहीं, 7 दिन का ही सैलरी लिया. तो 3 दिन का वो जो लीव है वो 1 साल ले सकता है अगले साल. ठीक है भाई, अगले साल वो ले सकता है. तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो लीव है इसको मैं आज ही बुक कर रहा हूं.
ये लीव जो है ना, वो जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, ये मेरा खर्चा में बुक करके रखूंगा। सर क्यों? अरे भाई मुझे तो सपोज उसने वो सैलरी नहीं लिया, सैलरी, उसको जो 3 दिन का जो सैलरी है वो मुझे कैरी फॉरवर्ड, मतलब मेरा खर्चा हुआ ना, मुझे तो उसको बिना इसका मुझे पे तो करना पड़ेगा उसको 3 दिन। आया समझ में? 10 दिन का अलाउड किया था, 7 दिन की सैलरी ली, मतलब सपोज वो 3 दिन नेक्स्ट टाइम कम भी काम करता है तो भी मुझे खर्चा तो बुक करना पड़ेगा। खर्चा तो मुझे बुक करना पड़ेगा। आया समझ में? अब ये खर्चा जब मैं बुक करता हूं, ध्यान में रख भैया, ये खर्चा बुक करते टाइम मैं कैसे एंट्री मारूंगा? देख, सैलरी में सिर्फ 30 लाख रुपए पे करूंगा, बैंक में से मेरा 30 लाख ही जाएगा, और वो 30,000 को जो वो कैरी फॉरवर्ड करके गया, उसको मैं अब बीच बुक करके रखूंगा। अब बीच क्यों बुक करके रखूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि उसने वो सैलरी, सपोज वो कम भी टाइम काम करता है तो भी ये खर्चा मैंने जो बुक करके रखा हुआ है, तो वो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अभी उसको पता है कि मेरी छुट्टी लैप्स होने वाली है, वो क्या करेगा? उसको 30 लाख रुपए मिल जाएगा, बट ऑब्वियस वो 3 दिन जानबूझ के छुट्टी लेगा, पर मैं उस टाइम पे उसका 3 दिन का एक्सपेंसेस जो है ना, वो कम बुक करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका बुकिंग पिछले साल ही करके रखा हुआ था। पिछले साल ही मैंने वो सैलरी बुक करके रखी थी। ये ध्यान में रख कि मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं कि भाई ये देखो, उसको 30 लाख भले पेमेंट होगा, पर 30 लाख पेमेंट, ये पेमेंट है, पर उसको आपको कैसे याद रखना है कि जो 3 दिन वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है ना सैलरी, उसकी सैलरी को 10,000 रुपीज से 30,000 ये लास्ट ईयर में ही बुक करके रखो। अभी करंट ईयर में क्या होगा? करंट ईयर में अभी 30,000 जो ऑलरेडी बुक किया हुआ है, भले पेमेंट तुम्हारा 30 लाख का जाओ, पर ये करंट ईयर में पेमेंट भले 30 लाख का जाओ, पर 30,000 जो कैरी फॉरवर्ड आपने किया था, वो लास्ट ईयर की सैलरी जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुका था, वो 3 दिन का सैलरी। तो वो लास्ट ईयर को हमें कुछ भी हाथ लगाना नहीं है, हमें उतना एक्सपेंडिचर जो हमने ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ है, तो उतना कम इस बार मैं बुक करूंगा। इस बार मैं सैलरी कितना बुक करूंगा? पी एंडल में सिर्फ 29,70,000, 29,70,000 ही दूंगा। ये ध्यान में रखो। तो ये एक्स्ट्रा जो 3 दिन उसके कैरी फॉरवर्ड हुए, उसकी सैलरी को देखो बेटा, ये मुश्किल है समझने तक। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जो भी कॉम्पेंसेशन, लीव कॉम्पेंसेशन है, तो उसकी सैलरी उतनी हमें कम बुक करनी है ये साल। और क्योंकि वो पिछले साल ऑलरेडी बुक हो चुकी है, वो पिछले साल ऑलरेडी बुक हो चुके, इसलिए बच्चों को ये स्टैंडर्ड डिफिकल्ट जाता है। हम लोगों को क्या लगता है, सो 30 लाख से पे कर रहे हैं तो उतना ही सैलरी बुक करो, पर वी आर नॉट गोइंग टू बुक ओनली 30 lakhs, वी विल बुक 30 lakhs plus, भले पेमेंट इज 30 lakhs, plus that 3 days का salary which he has taken carried forward in the next year, that is also my expenditure which I will book today because he carried forward that my leaves, and therefore utna 3 days might be I have to pay it later, and therefore I will do this expenditure 30 lakh 30,000. Got the concept now? And current year में क्या होगा? इन करंट ईयर ही हैज टेकन एक्स्ट्रा सैलरी। आया समझ में? हाँ, अभी वेट वेट वेट, आई विल सॉल्व योर क्वेश्चंस, आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन वन बाय वन, आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन। सपोज, सपोज if employee has availed in current year only 12 days leaves and he lapse with 1 day, he lapse with 1 day, still same entries, same entries. Why? Because now no more carry forward, no more carry forward, no extra expenses, and I already booked 33 days ka expenses in the last year, so I have to set up. So now see, my total expenditure should not go beyond 60 lakhs. My total expenditure here, because now it's lapse हो गया, तो 2 साल का expenditure, see lapse हुआ, not carried forward. So see the diagram, last year and current year. Now last year total must be 60 lakhs.
How? Because now there is no carry forward. 30 lakhs into 2, that will be my maximum expenditure. No carry forward. Lapse हो गया तो. So last year कितना हुआ था? Last year I booked 30 lakh 30,000. So current year में I will book because I'm paying that much, no? I'm paying only 30 lakhs rupees. I'm not paying extra amount to him. So 29 lakh 70,000. So if lapse, तो ये diagram आएगा. If lapse, ये diagram. So no change. No change in the answer number B. Your journal entries will be same. Your journal entries will be same. Why? देखो, हमने उसने 12 दिन का ही लीव लिया. 12 दिन का लीव लिया तो हम लोग क्या एक दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं क्या? हाँ, आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं क्या? आगे कैरी फॉरवर्ड किया रहता तो एक्स्ट्रा बुक अब भी किया रहता. आया समझ में? एक्स्ट्रा बुकिंग अब भी किया होता. ठीक है. एंड नाउ यू टेल मी, कंपनी एस्टिमेटेड employee will take only 2 days in a year. Now this is called as non-vesting. This is called as non-vesting. Vesting means we will pay him cash for unused entitlement. And non-vesting means unused entitlement on leaving, we won't pay cash for unused. So non-vesting, then we will consider only possibility. What we are going to consider? Only possibility. Okay. Non-vesting means he is not taking the benefit of all 3 days. We thought he will take only 2 days. Okay. तो last year में आप क्या entry करोगे? Now you only tell me. So you will estimate only the possibility. Possibility क्या है? 30 lakhs जो पेमेंट करना ही है, बिकॉज वो तो पूरा कटेगा कुछ भी नहीं. 30 lakhs and we thought 10,000 into 2. So how much is the provision? Salary account debit. Salary account debit. 30 lakh 20,000. So this is C ka answer. To bank, we paid 30 lakhs. And to provision for salary, 20,000. We thought he will take only. But what happened? But he can carry forward all 3 days ka leave. Okay. So now, salary account debit, our provision got wrong. Okay. ठीक है. When employee took 3 days ka salary, okay, salary account debit. Now this is a balancing figure. Provision for salary, we will reverse debit 20,000, but to bank we are paying 30 lakhs. So here only 20,000 will be reversed because we made a provision, and this year we will book salary 29 lakh 80,000. Kitna? 29 lakh 80,000, because we have not deducted anything of the employee. Employee का कुछ भी हमने deduct ही नहीं किया because he is allowed to take 3 days leave. But we thought he can carry forward 3 days. But we thought कि he won't take 3 days का leave. So we make a provision of only 2 days. कि हमें लगा कि यार genuine employee है, उसको छुट्टी नहीं लगेगा, 10 दिन लेगा और 2 दिन एक्स्ट्रा लेगा, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं करना पड़ेगा. So we will record only 29 lakh 80,000. See the total of expenditure. Total of expenditure should not exceed 60 lakhs. Expenditure total should not exceed 60 lakhs. So you will reverse 20,000. This is the answer. See, this is difficult to digest, but you do not have any other option. ये डाइजेस्ट करने को डिफिकल्ट है, फिर भी आपको यही करना पड़ेगा. A, B, same entries. If lapse also, you are paying 30 lakhs. Okay. So lapse also 30 lakhs you are paying.
and here you will record expenditure only 20,000 and you will reverse also only 20,000 because you thought 2 days ka lieu and balancing figure in the next year will be expenditure that you are going to book, that is 29,80,000। देखो एक बार हिंदी में समझ लो बेटा, ये थोड़ा हजम करने को मुश्किल है, मुझे पता है ये मुश्किल है हजम करने को। हाँ, यस बेटा, हमें पता नहीं है। देखो मैं वापस से तीनों सिचुएशन में, देखो पहले सिचुएशन में हमें क्या लगा, 3 दिन का सैलरी उसने कैरी फॉरवर्ड किया। 3 दिन जो थे, समझ लो 3 दिन के सैलरी उसने कैरी फॉरवर्ड किया। डोंट गिव अप, मुझे पता है ये मुश्किल है, मुश्किल है इसीलिए तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स मुश्किल है, मैंने पहले ही बोल दिया था। आज तो बहुत सिंपल सेशन है, कल का तो और डेंजरस होने वाला है। और आज का स्टैंडर्ड ये सबसे हाई लेवल स्टैंडर्ड है पूरे सिलेबस का, पूरे सिलेबस का सबसे डेंजरस स्टैंडर्ड है। ओके, ये स्टैंडर्ड अच्छे अच्छों को, सीए फाइनल के बच्चों को भी नहीं समझता, पहले ही बोल देता हूं, ये स्टैंडर्ड अच्छे अच्छों को नहीं समझ में आता, इसलिए स्लोली स्लोली जा रहा हूं। देखो बेटा एकदम सिंपल है, पहले मुझे क्या लगा था, कटो, अब एक क्या याद रखो कि कितना पैसा कट हुआ, पैसा कुछ भी नहीं कट हुआ पहले साल में, पहले साल में कुछ नहीं हुआ तो टू बैंक फिक्स हो गया। ओके, टू बैंक फिक्स हो गया। अभी 10 दिन की सैलरी अलाउड थी, बराबर है, 10 दिन की सैलरी को लीव करना अलाउड था। उसने कितनी छुट्टी मारी, 7 दिन। अभी इसका मतलब 3 दिन वो नेक्स्ट ईयर में लेगा, उसकी प्रोविजन आज ही बुक करनी है, 3 दिन की प्रोविजन आज ही बुक करनी है। पर भाई मुझे लगता है कि भाई नेक्स्ट ईयर में वो 3 छुट्टियां नहीं लेगा, ये मेरा मन बोल रहा है, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन पास्ट रिकॉर्ड, अरे ये बहुत ईमानदार इंसान है। दिस इज द ओनली हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, लास्ट वाला। इन रियल लाइफ यू विल डू ओनली फर्स्ट टू, in real life you will do only first two, but institute has given you one extra, answer, means provision कि ऐसा होता है तो your employee is genuine employee, he is not going to take more than 2 days, मतलब कैरी फॉरवर्ड। हाँ, 10 दिन लीव है तो he will take maximum 12 days। ओके, सो कि वो 2 दिन के ऊपर, सो व्हाई यू नीड टू डू एक्स्ट्रा प्रोविजन, ऐसा इंस्टीट्यूट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट बोल रही है कि आपको यदि लग रहा है कि आपका मन बोल रहा है कि वो 2 ही दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेगा, तो एक्स्ट्रा छुट्टी 2 दिन लेगा तो उसी की प्रोविजन करो भाई। हाँ, और यदि ये 2 दिन नहीं, आपको लगता है वो फुल छुट्टी ले लेगा, मतलब इस साल लैप्स हुआ ना, सॉरी इस साल नहीं लिया ना, तो नेक्स्ट ईयर वो पक्का लेगा, तो फुल 3 डेज की छुट्टी को रिकॉर्ड करो प्रोविजन। अभी आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ओनली 2 ही दिन छुट्टी लेने वाला है, मतलब 10 दिन और एक्स्ट्रा 2 दिन ले सकता है, मतलब 12 दिन, वो 13 दिन नहीं लेगा। आपका मन ये बोल रहा था तो आपने 2 दिन की प्रोविजन करो, पर बाद में क्या हुआ, नहीं वैसा नहीं हुआ। बाद में हुआ ये कि उसने पूरे 13 दिन छुट्टी ले लिया, उसने एक्चुअली 13 दिन छुट्टी ले लिया। तो फिर क्या हुआ, मैंने जो शॉर्ट प्रोविजन किया था वो 20,000 ही मैं रिवर्स करूंगा ना, तो एक्स्ट्रा छुट्टी जो है, एक्स्ट्रा छुट्टी अभी बुक करूंगा, जेब में से तो 30 लाख ही जाने वाला है। अलाउड ही उसको 3 दिन का था, पर मुझे लगा कि 2 दिन ही वो छुट्टी लेगा, इसलिए मैंने कम प्रोविजन किया था। आया समझ में? ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये लास्ट सिचुएशन थोड़ी हजम करने को मुश्किल है बेटा, वो समझ लो कि मुझे लगा था कि वो 2 दिन ही छुट्टी लेगा एक्स्ट्रा, 10 दिन छोड़ के, मतलब 12 दिन छुट्टी पे जाएगा, तो मैं काहे को पूरी प्रोविजन करूं, मैं 2 ही दिन की प्रोविजन करेगा। आया समझ में? एकदम इजी है, एकदम इजी, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा मुश्किल है, सिर्फ कैसे याद रखने का कि दोनों मिला के 60 लाख जेब से जा रहा है, एंड खर्चा भी सिर्फ अलग अलग बुक हो रहा है। पहले बार 30,20,000, उसके बाद 29,80,000, और ये केस में 30,30,000 एंड 29,70,000, तो 60 लाख का ही बुक होगा। लैप्स होने के बाद खत्म हो गया, लैप्स होने के बाद खत्म, मतलब खर्चा बुक करने का टेक्निक है, खर्चा बुक करने का टेक्निक है। मानसी डिफिकल्ट नहीं है, मानसी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बोल ये इजी है। ओके, इतना ही याद रख बेटा, मतलब तुझे मैं डायग्राम बना के देता हूं। देख, पेमेंट का डायग्राम ये है, पेमेंट का डायग्राम क्या है, 30 लैक्स, 30 लैक्स, ये पेमेंट का डायग्राम है। तो डायग्राम बना, अपने आप समझ में आएगा। एंड एक्सपेंडिचर बुक करने का मतलब ये 60 लैक्स, ये इधर याद रख। अब ये 60 लैक्स की टोटल लैप्स हो रही है, तो इधर भी 60 लैक्स की टोटल आनी चाहिए। ऐसे याद रख कि 60 लाख का एक्सपेंडिचर भी आएगा। पर अभी पहले साल में कितना बुक किया तूने, 30 लैक्स तो बुक करना है, प्लस कितने छुट्टी कैरी फॉरवर्ड की, 3 डेज की छुट्टी कैरी फॉरवर्ड की, तो 10,000 इधर आएगा।
मतलब कितना याद रखना है, 30,30,000। तो बैलेंसिंग फिगर ये नेक्स्ट ईयर बुक करेंगे 29,70,000। समझी बेटा, जितना जेब से जा रहा है उतना ही बुकिंग करने का। ये हुआ ए और बी सिचुएशन का। एंड सी सिचुएशन का क्या होएगा? तो तेरा मन क्या बोल रहा है? 30 lakhs प्लस 2 into 10,000, सो 30,20,000। तो नेक्स्ट ईयर कितना बुक करना है? 29,80,000 टोटल बुकिंग। पेमेंट तो तेरा कोई भी एंट्री में यही होगा, बट सिचुएशन ए बी entries will be different. Situation C, entries will be different. This is a master chart of this question. This is answer ka shortcut. But in exam, you should not use this shortcut. Huh? It is only for understanding. Got the concept? मुश्किल है, yes sir. It's difficult. But once you explain it, it's very simple. Once you explain it, it's very simple. Now understood? उसके नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं बेटा, अभी वो बुकिंग वापस से लैप्स हो गया, नेक्स्ट डायग्राम आएगा। सो सेम डायग्राम फॉर इफ लैप्स बेटा, देन फ्रेश डायग्राम। इफ नो लैप्स, assume if there is no lapse, then your expenditure you will record it in the next year. Again this diagram will continue for 90 lakhs then, for 90 lakhs then. हाँ, yes, okay बेटा, standard is not at all easy. हाँ, now this is a third question, चलो। now बेटा, this is your module question, huh? This is your module question actually. Now this question is okay. SS Limited changed its employee remuneration policy from 1st April 2012 to provide for 12% contribution to Provident Fund on leave encashment. So on leave encashment also we are providing 12%. So we are contributing to Provident Fund. As per leave encashment policy, leave encashment means if you take leave, we will give you cash. Okay. If you don't take leave, sorry. If you don't take leave, we will give you cash. You can encash. आप आपकी छुट्टी को पैसों में बदल सकते हो। आपने छुट्टी नहीं लिया तो you will get cash for that. As per policy, employee can either utilize it or encash. So you have two options. Either you take leave, or if you don't take leave, I will give you cash. Yes, sir. Already explained. As per 31st March 2013, as on 31st March 2013, the company obtained an actuarial valuation for leave encashment liability. So liability kitna hai? However, they do not provide 12% PF contribution, Provident Fund contribution on it. The auditor of the company wants to take Provident Fund, provide it. Matlab expenditure you should provide it. No. But the management replied that as and when employee avail the leave encashment that the Provident Fund contributed was made. Okay. So they are saying they will take a leave, then we'll see in the next year. No, 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 no. You are wrong. If you haven't take leave, then beta, we record the expenditure in the current year only. For your future leaves, we record expenditure today. So management is not correct. They are saying we will pay according to, we will record it according to payment. No, the company further intends that is this is correct treatment as it is not sure
whether employee will avail the leave, encashment, or utilize it. See, whether it takes leave or not, okay, we are not concerned for that. Whether it takes leave or not, we are not concerned for that. So remember, entity, if he renders services, okay, this is accumulated in nature, these absences. And whenever it is in accumulated in nature, additional amount is recorded as liability, or provision. Remember, तो ये आपको liability करके record करना ही पड़ेगा. See, because this is accumulated in nature, so no, we won't wait. Question number 2. Recall question number 2. We have provided for that 30,000, 10,000 into 3 days. So compulsory into 12%, we have to record it today itself. Okay. So additional amount is recorded as a liability. So we cannot wait for that. Okay. So IMP question. मस्त है कि नहीं एकदम. हाँ, फिर ये क्वेश्चन अभी समझ में आया. लास्ट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन 4. Try to understand. Question 4. Yes. So third question, you will record it as a liability. Question 4. से बेटा, tomorrow this is accounting standard. हाँ जी बेटा. Yes, you are correct. Tomorrow this standard will take U-turn और danger हो जाएगा. Okay. Today is only absences. Tomorrow or dangerous. Don't worry. I am with you. You do practice, you will understand it. Don't worry. चलिए. SS Limited has 350 employees. Okay. कितना? Same as a year ago. Same. Sum हो गया है वो same. The average staff attrition rate observed during past 10 years. Okay. Living rate. Pass हुआ है वो, past करो, past. Past 10 years is 6% per annum. SS Limited, इधर change करो, SS Limited provides the following benefits to employees. 4. Paid vacation 10 days per annum, regardless of date of hiring. Date है वो, 8 नहीं है, 11 नहीं, date of hiring. Compensation for paid vacation is 100% of employee's salary, and unused vacation can be carried forward for 1 year. As on 31st March 2001, unused vacation carry forward 3 days per employee. Average salary is 15,000 per day, and accrued expenses for unused vacation was 65,000. That is a provision. During 2001-2, employee took 9 days vacation
on an average, salary increases from was 10% in 2002, pass entry on the basis of FIFO. Read it carefully. Read it carefully. Read it carefully. See, on 31st March 2002, in 31st March 2002, unused vacation, unused vacation. See, we can calculate unused vacation on FIFO basis. Okay, 10 days per annum, correct है? 10 days per annum. Carry forward 3 days. So FIFO basis है. Carry forward 3 days. Allowed 10 days. Okay. Leave 9 days. Leave 9 days. Correct है? So leave 9 days means from here -3 and this is -6. So first in, first out. So first you will utilize carry forward. So of last year 0 and you can carry forward 4 days. You can carry forward 4 days. You can carry forward. Compensation for paid vacation. See, you can carry forward only 1 day leave. अब ये 1 day लीव किसके लिए? ये 1 day लीव हाँ, 1 day लीव किसके लिए होगा? जो होल ईयर है. Yes, this is if you are working for whole year, then this is the criteria. And for newcomers, you can carry forward. Carry forward is 0 for newcomers. Allowed 10 days. They taken 9 days. And 1 can be carry forward. Okay. So those already there. Those already there in the enterprise. So suppose if you are already there from last year, तो बेटा you can carry forward 3 days का लीव. So what is the policy? हाँ देखो policy क्या है? One more time. 350 employees. The average staff attrition is 6%. Attrition मतलब left. Leaving the organization. Attrition मतलब leaving the organization. SS Limited provide the following benefits. Paid vacation 10 days. Regardless the date of hiring. Means suppose
If you are newly joined also, you can take 10 days ka leave. And compensation for paid vacation, 100% of salary, and you can carry forward from the current year, can be carried forward 1 leave, 1 year. Okay, carry forward for 1 year. So you can carry forward your unused vacation for next 1 year. 1 year के बाद lapse हो जाएगा. Okay, so you can carry forward to next year. 10 days allowed है. 31st March 2001, unused vacation carried forward from the last year. So this is opening. Opening में कितना carry forward किया? 3 days. 3 days from the last year. Okay. And average salary is 15,000. Accrued expenses of last year is 65,000. Accrued expenses means this is opening provision. 65,000. And during 1-2, employee took 9 days ka vacation. Okay, 3 days, 10 days, 3 days of last year allowed, 10 days of current year allowed. He took 9 days ka leave. So first in, first out -3. And after that 6 days. So total leave 9 days. So carry forward in the next year 4 days for employees who are already existing employees. न्यूकमर को कैरी फॉरवर्ड कुछ है क्या? नो. Allowed 10 days, irrespective of any joining. And how much he has taken? 9 days. So 1 day carry forward for newcomers. For newcomers, 1 day. Now, how many employees you have? 350 employees. And how many employees are retaining? 94%. So 350 into 94%. 350. So 329 employees are existing employees. And how many employees are beta? Newcomers. Newcomers are 350 into 6%. 350 into 6%. 21 employees are newcomer. 21 employees are newcomer. ओके, एक बार हिंदी में बताता हूं. देखो बेटा, जो एम्प्लॉयज मेरे पास ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो एम्प्लॉयज मेरे पास ऑलरेडी काम कर रहे थे, 350 एम्प्लॉयज की संख्या है. 350 एम्प्लॉयज में से 94% मेरे पास रहते ही है. मेरा पास ये बताता है कि 350 में से 94% ये मेरे पास रहते, 6% जो छोड़ के जाते हैं मैं उनके बदले में नए एम्प्लॉय लेता हूं. तो 350 इंटू 94%, तो मेरे पास 329 एम्प्लॉयज ऑलरेडी है. और 350 इंटू 6%, ये जो छोड़ के गए हैं 6%, उनके जगह पे मैंने नए लोग ले लिए, 21 एम्प्लॉयज. अभी जो 329 एम्प्लॉयज है, उनके पिछले साल के 3 दिन बाकी है. कैरी फॉरवर्ड कितने हुए? 3 दिन. और इस साल उनको हमने कितना अलाउ किया? 3 दिन पिछले साल की छुट्टी मिलेगी, 10 दिन ये साल की छुट्टी मिलेगी, मतलब टोटल 13 दिन. पर ये तो बने अपने 9 दिन में इन्होंने निपटा दिया. अभी मैं पहले कौन से, और आप एक ही साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये जो 3 है वो पहले मैंने ले लिया, पहले मैंने 3 को ले लिया. ओके, 3 छुट्टियां वो ले ली. तो इस साल की कितनी छुट्टियां लेंगे ये लोग? 6 साल. अभी ये 0 कैरी फॉरवर्ड है जो ओपनिंग की आई. और ओपनिंग, सपोज अभी एग्जाम्पल, उन्होंने 2 ही छुट्टी लिए रहती, एज्यूम करो. 3 है, 10 है, ये अलाउड है. एज्यूम करो कि दे हैव टेकन ओनली 2 डेज का लीव. तो 2 डेज का लीव 13 अलाउड. बट दिस वन लैप्स, ये लैप्स हो जाएगा. एंड 10 यू कैन कैरी फॉरवर्ड. 10 you can carry forward to the next year as per first in first out. Understood the concept? Now they have taken 9 days ka leave. 9 days ka leave, first you will use this leave, and out of uh, 10 you use 6. So here it is 4, and opening lapse is 0. Okay, 0. So 4 you can carry forward. 4 you can carry forward. So this is a concept. Okay, newcomer
No carry forward because they are newcomer. Allowed, they also allowed 10 days. They have taken 9 days. So one can be carried forward. Okay. So now what is my salary? Salary is 15,000 per month, and there is increase in 10% in the current year. So 15,000 plus 10%. What is my salary amount? 16,500. 16,500 is my salary amount. Okay. So what will be the entry? 16,500. So my salary expenditure, I will book salary expenditure for unused vacation. For unused vacation. Apart from their salary, 329 employees into 4 days into 16,500 and 21 employees into 1 day into 16,500. So what is the total? Yes, tell me. 329 memory plus use karo. 329 into 4 into 16,500 and 21 employees into 16,500. I think 2 lakh, 2 crore, 20 lakh, 60,500. Okay. So my journal entry of the current year, benefit expense, employee benefit expense, debit to provision for employee benefit. Opening kitni ki thi? This is a provision I have to make. 220, 60,500. Already provision hai. Already provision of last year 65 lakhs. So I will provide for during the year 1 crore 55 lakh 60,500. Already I have opening provision, and this is a cumulative provision. This is a cumulative provision I will make. 2 crore 20 lakh 60,500. Last year already 65 lakhs. So current year I will make a provision of 1 crore 55 lakh 60,500. But this question is very, very important. I know it's difficult, but once you get the logic, it's not at all difficult. Are you getting this concept now? Ha. That is the current salary, re beta. Current salary is 16,500. Okay. So this is the answer. I know it's difficult, but Sanket sir student beta, no need to give up. No need to give up. Easy. Easy. Last question करेंगे. Last question. See, institute के module में से करेंगे. So this is only to give you the idea how we are making provision. So what I want to tell, if you are not taken the leave in the current year, we have to add this expenditure in the current year. So हमें ये 4 साल ये carry forward जो होने वाला है, that 4 दिन का carry forward in the next year, book expenditure today itself. Book expenditure today itself. Book expenditure today itself. बेटा ये आसान नहीं है, not at all easy. Need lot of focus. Yes, this is the entry. And now institute ka question. You will find it very simple now. Yes, institute का क्वेश्चन देखते हैं अभी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
हाँ, मजा आया। बहुत मजा आया मुझे तो। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन, कीप पेशेंस। हो गया, हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल इजी टू एक्सप्लेन ऑल दिस कॉन्सेप्ट. An enterprise has 100 employees who are each entitled to 5 working days for every year. Unused leaves can be carried forward for 1 calendar year. Okay. The leave is taken on first out of current entitlement. Now see, here is a LIFO method, and then balance brought forward from the previous year. So it's a LIFO method. So current year first you complete it, and then last year you will use it. So here it's not FIFO, it's a LIFO. The average unused entitlement is 2 days per employee. It's a last year. So opening कितना है बेटा? 2 days. Opening is 2 days. Okay. Based on the past experience, 92 employees will take no more than 5 days leaves in 2005, and remaining 8 employees will take average 6.5 months. अच्छा, ओपनिंग कितना है एंड करंट में 5 days. नाउ ओके, सो इट्स अ 2004 ओपनिंग एंड 2005 का 5 days. 92 employees, 92 employees, a diagram will not take more than 5 days on leave in 2005. कितना लीव नहीं लेने वाले? Not more than 5 days. Assume 5 days leave. Okay, 0 days. So here maximum 5 days. Now opening, yes, 0 days can be carried forward, and here 2 days lapse. ये lapse हो गए. 2 days lapse and 0 days carry forward. Okay. For 92 employees, this is the diagram. Okay. And 8 employees will take average 6.5 days leave. Okay. For 8 employees, diagram, 8 employees के लिए diagram. Opening 2 days, current year 5 days. It's allowed. Take total 6.5 days. So first we will use this and minus 1.5 days from the last year. So 0.5 lapse and 0 days carry forward. Okay. So what is the liability on 31st December 2004? See, this we are going to use in 2005. So 2005 में how many employees का 1.5 days use, and here 0 days use of last year. So provision for 2004 last year ka how much we are going to use?
1.5 days into 8 employees. So you should make a provision. What do you expect? That we will use 1.5 only. So 12 days ka provision in 2004. Okay, so this is the diagram. 92 employees and 8 employees. 8 employees ka 1.5 days you are going to use in the next year. So uska provision aaj karo. You are expecting on the past experience. It is expected in 2005. So on 2004, you will make a provision only of 1.5 days into 8 employees because 0 days for 92 employees in 2005. This is the expected scenario in 2005. And therefore, you will make a provision in 2004 only for 1.5 days into 8 employees. देखो बेटा, एक बार हिंदी में बताता हूं. 2005 का आप लोगों को विजन है, 2005 का एक्सपेक्टेशन है. आपको लग रहा है कि 92 एम्प्लॉय जो है ना हमारे, देखो हमने दोनों को 2-2 दिन का कैरी फॉरवर्ड किया 2004 से 5 में, और उनको 5 दिन का लीव मिलने वाला है 2005 का. ये कहां से कैरी फॉरवर्ड हुआ? 2004 से, और 2005 में से 5 दिन. अभी ये 92 एम्प्लॉयज है ना, हम लोग सोच रहे हैं वो तो 5 ही दिन लीव लेंगे. भाई वो बहुत बढ़िया लोग हैं, वो नहीं लीव लेने वाले, तो उनके 2 दिन का लीव तो वैसे भी लैप्स होएगा. ओके, सो मेरे जेब में से नहीं जाने वाला है. पर 8 एम्प्लॉय जो है वो 6.5 दिन छुट्टी लेंगे. अभी 6.5 दिन मतलब ये 5 दिन लिफो में से वो पहले में यूज करेगा नेक्स्ट ईयर में, एंड 1.5 ये 2004 का मैं यूज करूंगा. अभी 2004 का जो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 2004 का कितना यूज होने वाला है? कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 1.5 दिन का कैरी फॉरवर्ड होगा. सो 8 एम्प्लॉइज इंटू 1.5 दिन जो आप कैरी फॉरवर्ड करके यूज करने वाले हो, उसकी प्रोविजन करो. इतना सिंपल है. जितना कैरी फॉरवर्ड करके यूज करने वाले हो, ये 2004 का प्रेडिक्शन है. 2004 का प्रेडिक्शन है 2005 के लिए. 2004 में आप किधर बैठे हो? 2004 में. दिस इज द प्रोविजन ऑन 2004 फॉर 2005. सो प्रेडिक्शन. हाँ, एक ने लिखा था सर हम ज्योतिषी है क्या? हाँ, हम ज्योतिषी है. वी आर डूइंग द प्रोविजन, वी आर ज्योतिषी. ओके, यस, वी आर एस्ट्रोलॉजर. ओके, तो यहां पे वी हैव टू मेक अ प्रोविजन अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू यूज फॉर 2004. Question is very difficult to digest, but once you got the logic, in 2004 you will predict 2005, and accordingly you will use that concept. Understood? Now it's simple. Those students who are telling it's difficult, now it's simple for you, beta. हाँ जी सर, अभी तो याद करना पड़ेगा, अभी याद करना पड़ेगा. सर गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे. 80% इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स बेटा ये ऑप्शन में डाल देते हैं. ओके, ओके बेटा, आज यू हैव टू डू रिविजन्स. टुडे वी हैव डन अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, and now you will, now it's over. Cumulative and non-cumulating is over beta. Now you can read this theory and you can easily now correlate the concept. बेटा once you got the example, so examples by संकेत सर भी दिए हुए हैं, तो वो भी एक बार देख लीजिए. and once you get this example up to illustration 4, question 4, बेटा it will be very easy for you. मेरे क्वेश्चंस और डिटेल वाले क्वेश्चंस थे, इंस्टीट्यूट के इजी है. Journal entry will be the by amount beta, by whatever the amount. So लीव का अमाउंट कितना है उससे मल्टीप्लाई करना, बस खत्म. Whatever the salary expected of 2005, multiply by that. It's very simple now. Questions which are given by me,
are more difficult as compared to institute questions. Institute questions are very easy, but my questions will give you the clarity how to solve questions and what is the logic of these examples. My presentations are also better. 30 lakhs ka provision, but you should not do 30 lakhs only salary. You should record for carry forward and what you are going to use. Lapse wala don't use, but expenditure which are going to use, that you have to provide it for. Okay, so this is all for today's session. Thank you. I know today's session is very difficult to digest, but yes, SS students will never give up. बहुत अच्छे से करते हैं, मुझे पता है. यस, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था डोंट मिस टुडे सेशन. टुमारो more difficult questions. Okay, tomorrow's session will be, yes, this is the highest difficult standard in your whole syllabus. ये सबसे difficult standard है पूरे syllabus का. Mark my words. Thank you. Good night. Take care.